In the study of the biomes, one of the area which is very important for in discussion is the climate. So यहाँ पर ये बात हम बहुत अहम समझते हैं कि आबो हवा किसी भी इलाके की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको कंट्रोल करती है। अगर वो इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट है तो वहाँ पर उसकी डिफरेंट लाइफ फॉर्म मिलेंगी, डिफरेंट एक्टिविटीज़ होंगी। सेम इज़ द केस विद द मिडल एल्टीट्यूड, वहाँ पर डिफरेंट क्लाइमेट है, आबो हवा मुख्तलिफ है और इस वजह से उसका जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, प्लांट की जो लाइफ है और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी जो साइज़ ऑफ ट्रीज़ हैं वो डिफ़र करेंगे, सेम एज़ वी हैव इन द पोलर एरियाज़. So these are actually the conditions which actually controls the different activities or different formation of the life. In climatic elements, the temperature is the controlling factor. So it controls everything. So here today we'll discuss the forest type, which is actually called the savanna. So this actually closer to the mountain foothills, but is a continental type of environment. और ये ओशन या मैरीटाइम लाइफ से दूर वाक़ हुआ है, यानी इसका जो मैरीटाइम इम्पैक्ट है या इफ़ेक्ट है वो कम है इस पे. So in the steppe biomes, there is not much humidity in the air because steppe is located away from the ocean and closer to the mountain barriers. So we have example of the alpine areas, which are actually the things which are located in the center of the mountains, like Himalaya भी इसमें है. We have the mountain example of Rocky जो कि North America में है. So these are the areas where we have this type of forest type. Now, steppe biome is a dry, cold grassland that is found in all of the continents except Australia and Antarctica. It is mostly found in the USA, Mongolia, Siberia, Tibet, and China. The things are related with the northern part of the hemisphere. So जो शुमाली निसब कुरा है उसमें ये ज़्यादातर हमें फॉरेस्ट टाइप मिलती है, जिसे हम स्टेप फॉरेस्ट कहते हैं या स्टेप टाइप ऑफ वेजिटेशन कहते हैं. Now here we have the distribution of the steppe biomes. Most of the area जो इसमें हमें देख सकते हैं तो वो तिब्बत जो कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ हिमालय है उसमें ये मौजूद हैं, या रॉकी हैं जो कि नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न साइड का जो माउंटेन रेंजेस हैं उसके रॉकी के फुट हिल्स में ये मिलती हैं. यहाँ पर हम लास्ट लेक्चर में ये भी पढ़ चुके हैं कि ये रेन शेडो इफेक्ट जो है वो भी वहाँ की वेजिटल कवर को कंट्रोल करता है, जिसमें डिसेंडिंग एयर जो है वो माउंटेन जो लीवर्ड साइड है वहाँ से वो नीचे की तरफ प्लेन एरियाज की तरफ मूव करती है. सो हेयर वी हैव द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द रेन शेडो इफेक्ट, जो कि वहाँ की जो वेजिटल कवर है उसको उसने डिफरेंट टाइप में चेंज कर दिया है. जो पैसिफिक हाईलैंड का जो विंडवर्ड साइड है वहाँ की वेजिटल कवर और है, और उसका जो लीवर्ड साइड है रॉकी माउंटेन्स उसकी जो है वेजिटल कवर डिफरेंट टाइप में मौजूद है. इट मीन्स के जो क्लाइमेटिक कंडीशन है जिसमें टेम्परेचर कंट्रोल कर रहा है वो इम्पॉर्टेंट है इनकी डिस्ट्रीब्यूशन में. The steppe, also called the short grass prairies. It is a vegetation type consisting of short grasses occurring in sparse clumps or bunches. Scattered shrubs and low trees may also be found in the steppe. The plant cover is poor and much bare soil is exposed. Many species of grasses and shrubs occur. A typical grass of the American steppe is buffalo grass. Other typical plants are the sunflower and loco weed. Steppe grades into semi-desert in dry environment and into the prairie where rainfall is higher. This map of the grassland biomes shows that the steppe grassland is concentrated largely in the middle altitude areas of the North America and the Eurasian. Steppe grassland correspond well with the semi-arid subtype of the dry continental climate. Spring rain
nourishes the grasses, which grow rapidly until early summer. By midsummer, the grasses are usually dormant. Occasionally, summer rainstorms cause periods of renewed growth. Next is the desert biome, which is an ecosystem that forms due to the low level of rainfall. It receives every year. Desert cover only about 20% of the total surface of the earth. So it has a semi-arid or arid type of climate. Mostly it occupies the arid type of climate, जिसकी जो rainfall है is less than 10 to 20 inches per year. सो यहाँ जो वेजिटल कवर है वो स्पार्सली है. यहाँ की जो लाइफ है इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द एरियाज विच आर अंडर द वेजिटल कवर. यहाँ का जो वाटर का जो इश्यूज हैं, जो सरफेस वाटर है वो भी कम है, वहाँ ग्राउंड वाटर भी कम है. सो दीज आर द थिंग्स विच आर रिलेटेड टू द desert type of biomes. Now, most of the areas of the desert biomes are located in every continent. Like in Africa, it is the northern part of the continent, which is called the Sahara Desert, is the largest desert of the world. Then the deserts of South Asian countries, जिसमें ये हमें देख सकते हैं कि राजस्थान भी है, जिसमें चोलिस्तान भी है, and थर का desert है. So these are the deserts of the South Asia. पाकिस्तान में ये जो क्लाइमेट है दैट इज़ एरिड एंड सेमी एरिड. सो मोस्ट ऑफ द पाकिस्तान जो है इट इज़ रिसीविंग लेस देन 20 इंचेस ऑफ रेनफॉल. सो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो क्लाइमेट है वो डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट है या सेमी एरिड और एरिड टाइप ऑफ क्लाइमेट है. देन इज़ दी गोबी डेजर्ट, जो कि मंगोलिया में और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ चाइना में है. दी वेस्ट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट. So these are the areas which are under the desert biomes. The desert biomes include several formation classes that are traditionally from grassland and savanna biomes into vegetation of the arid desert. Here we recognize two basic formation classes, semi-arid desert and dry desert. Now, semi-arid desert is a traditionally formation class found in a wide latitude range from the tropical zone to the mid-latitude zone. It is identified primarily with the arid subtype of all three dry climates. Semi-arid or semi-desert consists of sparse shrubs. One example is the vegetation of the middle and southern part of Rocky Mountain ranges and Colorado Plateau. Recently, as a result of overgrazing by the livestock, semi-desert shrubs vegetation seems to have expanded widely into the areas of the western United States. Now, dry desert is a formation class of the plants which are actually widely dispersed over only a very small proportion of the ground. The visible vegetation of the dry desert consists of small, hard-leaved or spiny shrubs. Many species of the small annual plants may be present but appear only after a rare but heavy desert downpours. Many of the world map are assumed to desert vegetation has no plant cover at all. So there are four major types of desert in this biome: hot and dry, semi-arid, coastal and cold. They are all able to characterized by a special kind of plants and animal life that are able to survive there. So here we have the distribution of the desert biomes.